बाहर निकल रही है। आपने म्यूजिक प्रोडक्शन और साउंड इंजीनियरिंग पढ़ाई की है। आपने ग्रेविटी जो कि हसल 2 में टॉप 5 में रहे हैं, उनके लिए आपने बहुत सारा म्यूजिक बनाए जा रहे हैं। आप अर्जुन कानूंगो के लिए म्यूजिक बना रहे हैं। आपका एक एल्बम जो आपने ग्रेविटी के लिए किया है, मून बाउंस। I grew up hating music. Hating? Yeah. Who hates music? The first few things that I downloaded was like entrance music of WWE wrestlers. So I used to listen to that. I used to listen to like the John Cena song. 10th में इतने कांड कर लिए थे स्कूल में कि क्या कांड? तो आपको क्या निकाल दिया गया था, ऐसा है? that was a threat. पहले ऐसा नहीं कि I need to talk to girls, but now that it's being suppressed, हाँ. I want to talk to girls all the more. तो ये तो होता है, आपको जिस चीज के लिए मना किया जाता है वो आपको और करने का मन होता, तो किया आपने? बिल्कुल किया. अरे Of course. I had a girlfriend in 12th standard and she was in 11th. Music room था, वहाँ पे drums थे, तो I would ask चिन्मय सर एक थे, उनको मैं बोलता कि मेरे को आना है सीखने के लिए, and he's like हाँ जा तेरे को सिखाता हूँ मैं. Now he is a तबला player, so I went and he's like हाँ चल दिखा मुझे तू क्या बजाता है. Then I played some and he's like अरे यार तू तो बहुत अच्छा बजाता है, चल एक काम कर, तू मुझे drums सिखा, मैं तुझे तबला सिखाऊंगा. भाई मेरे को तबला नहीं सीखना है and मैं तुमको क्यों सिखा रहा हूँ. So सर मैं सीखने आया हूँ यहाँ, आप भूल रहे हैं. I was like I've come to learn, why are you Yeah. asking me to teach you? तो मैंने 11th में साइंस लिया, पूरा साल फेल हुआ हूँ मैं, एक बार भी पास नहीं हो पाया. Can you imagine, like none of the subjects I've passed even once. The whole year physics, chemistry, maths, computers fail. English में खाली पास होता था. Oh my God. I would fail the whole year. I just destroyed my self confidence completely. And तो हॉस्टल था तो टीचर से भी उतनी डांट पड़ रही थी. आपके पापा मम्मी यहाँ नहीं थे, वरना पिटाई भी होती डांट के साथ. My dad was like तू मेरा बेटा है, तू कॉमर्स ही कर, तू साइंस नहीं कर पाएगा. Like कर ही नहीं पाएगा. हाँ, so he'll be giving his exam sitting with science students in the final board exam. तो dad is like best है, कॉपी भी नहीं करेगा. I'm sitting with science students. चांस मुझे दिया गया कि भाई चलो कॉमर्स, एंड कॉमर्स में जाके मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप कर दिया. अरे भाई जो पूरा साल फेल हो रहा था, मैं नॉर्थ गुजरात में 3rd आया. वाओ. ऑस्ट्रेलिया में जैसे आपने बताया लॉकडाउन हुआ, तो वो वक्त कैसा था? Like even when I would want to go to a grocery store first thing in the morning to buy my groceries, because you would hope कि भाई सुबह अभी खुला है तो और अभी क्या कुछ मिल ही जाए, मिल कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा. And even when I would go inside, there's nothing there. Like shelves are just empty. तुम्हें बिस्किट, instant noodles ये सब चीजें मिल जाएंगी, कचरा basically. Fresh fruits, fresh vegetables, fresh meat, you would not find any of these things. So I remember this one week it got really bad कि I had to just survive on instant noodles. 1 week? Yeah. 1 full week? Hi, Hello. Maharshi Jani. Hello. AKA Outfly Music. Thank you Yes. so much. आप यहाँ आए हैं. अरे thank you for और having me. ये वार्तालाप करेंगे आप मेरे साथ आज. I'm very बिल्कुल. excited and I'm nervous. अच्छा. Why am I nervous? Why are you nervous? Why am I nervous? I shouldn't be. Yeah. Be. So Why are you nervous? I don't know. I'm your fan. That's Oh. why. तो fans जब ऐसे करते हैं, अच्छा. जब उनके स्टार सामने आते हैं तो ऐसे करते हैं वो. हाँ, like I don't come here every other day. No, but then still, I'm your fan. I'm a fan of your music. Right. So Outfly Music, आपने म्यूजिक प्रोडक्शन और साउंड इंजीनियरिंग पढ़ाई की है. जी. और उसके बाद आपने ग्रेविटी जो कि हसल 2 में टॉप 5 में रहे हैं, Yeah. उनके लिए आपने बहुत सारा म्यूजिक बनाए जा रहे हैं. Yeah. आप अर्जुन कानूंगो के लिए म्यूजिक बना रहे हैं. और आपका जो एल्बम था मून बाउंस, उसमें और भी रैपर्स थे, जैसे सुमायो की ग्रेविटी के अलावा मानोनी Yeah. एंड Manoni is a राजे. singer. Yeah. आपने ये कब डिसाइड किया कि आपको म्यूजिक ही करना है? So music मैंने as such decide नहीं किया था कि मुझे start करना है, but at a young age I was influenced by music in a way that I could have never sort of imagined. So what happened is I grew up hating music. Hating? Yeah. Who hates music? I do. So Oh my God, you did. I did. You Yeah. did. Not anymore, obviously. अब मुझे बताइए, why did you hate music? I don't know. Honestly, I would growing up. मतलब मुझे नहीं समझता था कि okay, this is music and this is noise. अच्छा. So any sort of loud noise or anything, I would just go to the other room and sit. Whether it's music, whether it's people talking or whatever. Okay. So I would just go to the other room and I would sit there because I found peace more fun, I guess. Okay. So but this was up until 5th standard. And my mom being a musician, so she practices at home all the time, her singing and all of that. So every day there's a tanpura on and she's singing and doing her riyaz and all that. Wow. I hated all of that. I was like, this is not because that was my initial idea of music.
and just listening to somebody do riyaz is not as much fun, no? हाँ वो तो है. So initially वो था, and then फिल्म में जो गाने वाने आते थे, but फिल्म में उतनी देखता नहीं था. Like I was not big on entertainment and all of that. I honestly prefer just going out and playing. अच्छा. And that was it for the most part. Then at some point, I guess my parents must have realized कि he needs to have some sort of art in his life, because my mom has always had some sort of art, like whether it's music, whether it's drawing, painting, all of that. She did all of those things. When I was in 5th standard on my birthday, they gave me an MP3 or MP4 player, one of those really tiny ones that you can just put like a few, like 2 GB का memory आता था उसमें. अच्छा. And you could load like some songs onto it and you could listen. तब movies, मतलब तब मेरा ऐसा हो गया कि यार इसको मैं use क्या करूँ, like what do I listen to on this? So the first few things that I downloaded was like entrance music of WWE wrestlers. So I used to listen to that. I used to listen to like the John Cena song and like the Triple H song and that kind of stuff, because I didn't know what to consume. So that was what I used to watch WWE. तो वो पता था कि भाई चलो इसमें म्यूजिक आता है तो ये अच्छा लगता है मुझे, तो आई वुड लिसन टू दिस. एंड तब मूवीज एक दो आई थी जो मुझे पसंद आ गई थी. वन वाज जब वी मेट एंड वन वाज दिस वन धूम. Oh. हाँ, तो ये दोनों मूवीज अराउंड द सेम टाइम आई थी, 2005 2006. Okay. एंड आई रिमेंबर कि इनके गाने मुझे अच्छे लगे थे. तो वो तब नहीं समझता था कि क्यों अच्छे लगे, कि द कॉम्पोजिशन इज राइट और द सिंगर इज गुड और व्हाटएवर, बट आई वाज लाइक दीस सॉन्ग्स आर नाइस. तो इन दोनों फिल्मों के गाने मैंने डाउनलोड करके MP3 में डाल दिए अपने. एंड आई रिमेंबर दिस रोड ट्रिप दैट वी हैड गॉन ऑन, लाइक फ्रॉम मस्कट टू दिस अदर सिटी कॉल्ड सलाला, व्हिच इज लाइक 1000 किलोमीटर्स, एंड इट्स अ 7 to 8 hour ड्राइव. वो ड्राइव पे मैंने जब वी मेट और धूम का जो पूरा एल्बम है बस वो ही सुना है लूप पे. आई हैवंट स्पोकन टू माई पेरेंट्स एट ऑल. मैं ईयरफोन्स लगा के बस जब भी मेट बजे ही जा रहा है, बस ये इश्क खाए इतनी बार सुन लिया मैंने. अरे यार, So ये इश्क है तो मैंने भी बहुत सुना है. हाँ, love that song. Yeah, So, it's beautiful. So that's how it started. Like that's how I started to first appreciate music. That went on for a bit. Then in another year or so, like in 6th standard or something, maybe I met another friend of mine who also had an MP3 player, and he was like, "What are you listening to?" So I showed him my collection, and he's like, "Yeah." So he's like, "Why do you not listen to English music?" So I was like, "Okay, well, share something with me." So then he added a few tracks onto my MP3 player, which had stuff like Linkin Park, Okay. Akon, the usual what we used to listen to like back then, people of my generation. So I started listening to all of that, and then I started getting more into music. I'm like, okay, this is what music can also be. वो सिर्फ वो नहीं है जो मैं अब तक सुनता आ रहा हूँ. Then my mind opened up a little bit कि okay, I can find stuff that I like if I just look for it. So then I started looking for more stuff, and then started consuming music more. And by the time I was in 8th standard, I was like, okay, I want to like learn how to play something. अच्छा. Because I had a friend in my class, and he was like my best friend, and he used to his name is Arjun. He would attend these drum classes every week, and I honestly joined drum classes with him only to be able to spend more time with the guy, because he was like my best friend. So I was like, I want to meet you in school, I want to meet you outside of school, wherever I can. So तो काफी पैशनेट हैं आप मतलब Passionate जो तो की नहीं तरह मैं बोलूंगा. पीछे पड़ जाते हैं. हाँ, जो मतलब पसंद आ गया उसके एकदम ऐसे पीछे पड़ जाते हैं, I guess, yeah. चाहे वो अर्जुन हो चाहे वो म्यूजिक हो. हाँ, so back then right? I think my passion was more so like hanging out with Arjun. Okay. So मैंने उसके साथ सीखना चालू किया, and it was great because I learned in 1 year what he had learned in 4 years. So I was quickly picking up stuff as well, and that really like gave me the confidence कि okay, maybe I can do this. And then school में bands join किए, we like join किए मतलब we formed bands and we would perform in the school annual day and all of that. हाँ. So that kept happening for the longest time. हाँ. Production and all that happened much later, like when I studied audio engineering and all. उस पे भी आते हैं बाद में. हाँ. तो बेसिकली अर्जुन की वजह से Yeah. म्यूजिक में रुझान आपका. Absolutely. I tell this to him all the time. कि थैंक यू सो मच अर्जुन. Thanks, थैंक यू Arjun. सो मच. Thank you. आपकी वजह से आउटफ्लाई म्यूजिक हमें मिला है. Yeah, for sure. तो आपने मस्कट की बात की है. मस्कट में आप कब थे? From age 3 to like 16. Yeah. अच्छा. We moved there in I think 2002 or something. कहाँ से? मुंबई से. मुंबई Yeah, से. yeah. अच्छा. तो आप यहाँ ही पैदा हुए, ऐसा है क्या? गुजरात में पैदा हुआ हूँ मैं. गुजरात में. हाँ, my mom's native place. अच्छा. And then mom had moved here after marriage. So मुंबई में हम लोग रह रहे थे. Dad
का जो फैमिली है उनके साथ, एंड डैड वाज इन मस्कट वर्किंग. ओके. And when I was like 2 or 3 years old, he got his family status or whatever जो होता है वहाँ पे. तो then we moved with him. ओके. And yeah, I was there until like 10th standard, and then after that I came to India, and then ओके. तो वहाँ पे पढ़ाई कैसी थी? वहाँ पे माहौल कैसा था? स्कूल में? माहौल honestly बहुत अच्छा था. So one thing is it's a very protective environment because you're being dropped by your parents to school, and school buses का भी है concept लेकिन कम है. Like most people get dropped by their parents. अच्छा. So काफी protective environment and it's a very safe country and a safe city to live in. ओह. So that was good. Regarding education, it was at par with what we study here because CBSE था मेरा school. अच्छा, वहाँ भी CBSE Yeah, है? it's an Indian school. So over there, it's kind of segregated that Indians study in their schools and like the Omanis, they study in their separate schools. अच्छा. So every country has their schools in that. Like Pakistanis have a different school, Indians have a different school. Wow. So Indian school was like all the schools in the Middle East, as far as I know, are CBSE. अच्छा. The ones that are for Indian kids, they're all CBSE schools. So पढ़ाई तो जो यहाँ होती है वही हो रही थी. So yeah, that was pretty much the same. आप पैदा गुजरात में हुए, लेकिन गुजरात में वक्त आपने बिताया है क्या? Not then. So after I moved out of Muscat, I was in Gujarat for a couple of years. मेरा 11th और 12th मैंने हॉस्टल में किया. गुजरात में? Yeah, in Gujarat. तो 11th 12th वहाँ नहीं था? ओमान था में वहाँ नहीं पे. था? I just it's weird. So 10th में इतने कांड कर लिए थे स्कूल में कि क्या कांड? ओके. just बहुत मस्ती. बदमाशियां की आपने बहुत स्कूल बहुत में. बहुत absolutely. तो आपको क्या निकाल दिया गया था, ऐसा है? That was a threat. So you know how you have to after 10th you have to like get a readmission or something like that for your 11th and 12th. हाँ. So our principal had threatened me and like a bunch of my classmates कि तुम लोग को तो मैं दूंगा ही नहीं admission ऐसा ऐसा. Which wasn't true. Like he gave admission to the rest of them, but I got scared personally कि I'm like ये तो admission नहीं मिलेगा तो यार problem हो जाएगा. तो I don't know what I'm going to do with my पहले ही future. चले गया. तो मैं पहले ही हार मान ली. And not just हार मान ली, I was also like in that mindset कि यार बहुत बदतमीजी कर ली मैंने, बहुत बदमाशी कर ली. I need to like get my life on track. Like this is me in 10th standard thinking about this. तो ये आपके मन में आया? मेरे मन में आया. This was completely my आपके decision. मम्मी पापा ने डांटा, पिटाई हुई, उसकी वजह से तो नहीं था ये? नहीं, not really. No. पिटाई हुई थी? पिटाई तो बहुत हुई है. 10th में भी हुई थी? 10th तक तो हो ही रही थी. हाँ. बाप रे. ओके. So no, it wasn't because of that at all. पिटाई हो रही थी, but because I was so like I understood the reasons for the पिटाई as well कि हाँ मैं पिट रहा हूँ क्योंकि मैंने ये किया है. तो आपने माना कि आपने बदमाशी की, इसलिए आपकी पिटाई हुई और Yeah. अब आपको सीरियस हो जाना चाहिए पढ़ाई के बिल्कुल. लिए. Yeah. That's very good. Too young an age to be thinking all these Yeah. things, but yeah. Yeah. So that happened, and then I told my parents कि मेरे को इंडिया जाना है. I want to like ज़्यादा exposure चाहिए. उनको तो ये नहीं बोलने वाला था मैं कि like I need to start clean and whatever. Yeah. So I told them that I want to go to India. I want to study in a hostel, and I had recently seen Tare Zameen Par. Oh. So I was like, okay, hostel life seems fun, Okay. and I'm not going to cry like him. Okay. I was wrong. I was very, very wrong. अच्छा. I was very wrong on that, but I was like, yeah, this seems fun. I could go to a hostel. So they were like, where do you want to go? I'm like, पंचगनी जा सकते हैं. अरे वाह, क्या तो- जगह चुनी है. उन्होंने बोला कि नहीं पंचगनी तो हमारा कोई है नहीं वहाँ पे, तुम ये वाली स्कूल में चले जाओ बिकॉज वहाँ पे मेरी मॉम की मामी was a teacher in that school. So and she was at like a high like supervisor position kind of thing. Okay. So they were like कोई family का एक रहेगा तो थोड़ा मतलब they'll be able to take care of you also and also they'll be able to keep an eye on you. I think that was the primary objective, to probably. keep an eye on you. Probably, yeah. तो फिर मैं वहाँ चला गया and that was a huge culture shock first of all कि मस्कट से a very very different environment to a very different environment कि यहाँ पे उतने लोग इंग्लिश में बात नहीं कर रहे हैं. अच्छा. हिंदी में भी बात नहीं कर रहे, गुजराती में बात कर रहे हैं. तो आपको गुजराती आती थी? गुजराती मुझे बचपन से लकीली अच्छी आती है. लाइक माय गुजराती इज वेरी वेरी क्लीन, वेरी फ्लुएंट बिकॉज इन एट होम वी ओनली स्पीक इन गुजराती. मी एंड माय पेरेंट्स वी डोंट स्पीक इन एनी अदर लैंग्वेज. सो एंड इट्स अ कंफर्ट थिंग. मतलब पेरेंट्स के साथ तो मतलब इंग्लिश में बात करना बहुत अजीब लगता है. अच्छा. तो वी हैव ऑलवेज स्पोकन इन गुजराती बट only speaking in Gujarati. Matlab, over there it was like I can step out of my house and I have to speak in English or Hindi or whatever. But over here it's like it's only Gujarati wherever you go. So that was a little new for me. Okay. And also the kind of people like in Muscat I felt like the people were much more open-minded and all of that. Open-minded कैसे? One very simple example is that कि school में
कभी लड़के लड़कियों को बात करने से रोका नहीं गया है माई एंटायर लाइफ लाइक इट्स बिन अ कोएड स्कूल एंड वीव बिन इंटरेक्टिंग विद गर्ल्स एंड वीव हैड आवर गर्लफ्रेंड्स एंड ऑल दैट इन लाइक 7th 8th स्टैंडर्ड क्योंकि Okay. दैट्स जस्ट हाउ द स्कूल ऑपरेट्स कि इन सब चीज़ों में वो लोग नहीं पढ़ते. अच्छा. हाँ मतलब कुछ ज्यादा ही कांड हो गया तो फिर या लाइक यू नो इफ इट्स अफेक्टिंग योर स्टडीज एंड इफ यू आर यू नो डूइंग समथिंग इन स्कूल एंड योर पेरेंट्स नीड टू बी इन्वॉल्वड एंड ऑल दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी बट बेसिक इंटरेक्शन बिटवीन यू नो गर्ल्स एंड बॉयज वाज नेवर टैबू व्हिच इट इज इन गुजरात इवन टुडे. सो उस स्कूल में ऐसा था कि नाउ आई वाज द न्यू किड. पर आप कोएट में थे. कोएड ही था वो. हॉस्टल्स अलग थी, बॉयज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल अलग थी, बट द स्कूल वाज अ कोएड स्कूल. वहां पे ऐसा हुआ कि आई वाज द न्यू किड एंड आई वाज लाइक मस्कट से आया हुआ तो ऐसा थोड़ा फॉरेनर टाइप बच्चा था. अच्छा. तो द गर्ल्स स्टार्टेड टॉकिंग टू मी. Oh, lucky you. No, I mean yeah. But आप शांत से कोने में बैठने वाले ऐसे लड़के थे तो लड़कियों को लगा no, अरे no, no, अरे no, no, अरे. no. I mean yes, I was sitting in the corner and Were you a player? ओ तभी सब लड़कियां आ रही थी एकदम player मधुमक्खियों तो की पता नहीं यार अभी. But no, but the thing is कि वो लोग मुझसे बात करना चाहते थे because I must have seemed like an interesting person or whatever. And to me this is normal कि ठीक है लड़के लड़कियां बात करते हैं. लेकिन हॉस्टल जाके मुझे मेरे क्लास में लड़कों ने बताया कि भाई ये सब मत कर तो पकड़ा जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. मैं बात करने में भी. हाँ. बाप रे. It has happened to me where I've been seen speaking to a girl for like more than once and a teacher has noticed that and then they've taken me into a corner कभी तो मतलब जब स्टूडेंट्स बाकी नहीं है और मुझे ऐसा वार्निंग दे दिया कि भाई तू देख तू क्या कर रही है वैसा. So yeah, that's just you know that's how it is over there. In तो all फिर the वहाँ पे schools. तो बहुत अफेयर्स होते होंगे कॉलेज के बाहर. So Among स्कूल the- के बाहर तो लाइफ ही नहीं है. This is school by the way. It's 11th and 12th. उधर जूनियर कॉलेज का ये नहीं है. It's ओके school ओके. school. अच्छा. यूनिफॉर्म एंड एवरीथिंग. हाँ. तो स्कूल के बाहर सिर्फ उनकी लाइफ है जो उस हॉस्टल में नहीं रहते. सो हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर द वंस हु लिव इन द हॉस्टल, हाफ ऑफ देम आर द वंस हु कम फ्रॉम लाइक नियर बाय टाउन्स एंड व्हाटएवर. सो उनकी लाइफ है आउटसाइड ऑफ स्कूल की भाई स्कूल खत्म हो गया देन दे गो होम एंड दे डू व्हाटएवर दे वांट. हमारी लाइफ इज in that campus. We're not allowed to exit that campus unless it's a vacation or unless our parents show up and want to take us out for a day or something like that. Okay. तो हमारी लाइफ तो उस कैंपस में ही सीमित थी और उस कैंपस में तुम कुछ नहीं कर सकते हो. मतलब you have to be very very discreet but then you have to be so discreet that then is it even a relationship or is it even a proper interaction. कि लड़के थे मतलब जो बोलते थे कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है बट देयर रिलेशनशिप इज रिस्ट्रिक्टेड टू जब ऐसे असेंबली में पास हो रहे हो उसका क्लास की लाइन जा रही है और अपने क्लास की लाइन जा रही है एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे हैं. दैट्स इट. दैट इज इट. फिर दूसरा होता है कि अगर दोनों अलग क्लासेस में है तो देन दे वुड आस्क a third person who like लड़का अगर उसके क्लास के किसी लड़के को जानता है he would ask him to pass on a letter to her and then letter में चलता था उधर ये relationship. तो मेरे जमाने में होता था. आउटफ्लाई मतलब आपके Exactly. जमाने में भी हो रहा था. आई एम सरप्राइज. This is what 2012 and 11 and 12. बाप रे. So yeah. बाप रे. Okay. So yeah, so that's how it was in Gujarat and like it took me some time to sort of adjust to these new changes and all. कि okay now I can't talk to girls anymore. Okay. पहले ऐसा नहीं कि I need to talk to girls but now that it's being suppressed I want to talk to girls all the more. Of course. तो ये तो होता है. आपको जिस चीज के लिए मना किया जाता है वो आपको और करने का मन होता है और जिस उम्र में आप उस समय वहां थे तो अगर मना कर दिया तो ये तो करना ही है. ये तो मन में आ जाता Exactly. है. तो किया आपने? बिल्कुल किया. अरे Of course. I had a girlfriend in 12th standard and she was in 11th. तो 11th वालों का जो हॉस्टल था वो ग्राउंड फ्लोर पे था और हम लोग का फर्स्ट फ्लोर पे था. तो ग्राउंड फ्लोर पे मेरा एक दोस्त था राज जो उसके क्लास में था. He used to pass my letters to Malvika. Oh my God. इस समय तक म्यूजिक में आपका रुझान आ गया था कि? हाँ, so like I said, मस्कट में मैंने ये चालू कर दिया था सीखना drums. Until 10th, so 9th and 10th is when I learned some. I didn't really give any exams because मुझे ऐसा ये like I didn't want to get competitive about it. I wanted to just have fun. तो मैंने एग्जाम पर ये मुझे एक बात बताइए, आपने ड्रम सीखा, एग्जाम नहीं दिया, आपके मम्मी पापा को उससे फर्क नहीं पड़ा? नहीं, honestly not. Like तो उन्होंने आपको ये नहीं कहा अरे हम सिखा रहे हैं तुमको, अब तुम एग्जाम तो दोगे ही? So one thing is कि उस टाइम पे exams were costly. They still are, I'm sure. They weren't sure like how far am I going to take this whole music thing. अच्छा. So they didn't push me to get more involved in it or whatever. Okay.
पर ये तो उनकी दाद देनी पड़ेगी मुझे कि दे डिड नॉट पुश यू, क्योंकि क्या होता है आमतौर पे अगर पेरेंट्स आपको किसी चीज़ के लिए एनकरेज कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि आप पूरा करें क्योंकि आपने शुरू कर दिया है। हाँ, बट द थिंग इज इनिशियली एनकरेजमेंट थोड़ी सी कम थी, अच्छा। बिकॉज before that, in the earlier years they had tried to put me in some random classes ki karate सिखा दिया. I was doing swimming for a while. अच्छा। abacus की एक class होती थी, हाँ। and they claimed that this helps you with your normal studies a lot Yes, and all yes, that, yes. all that. हाँ। They forced me to join that. I did that for a few months. So everything I would do for a few weeks or few months, and then I would quit it because I never wanted to do it in the first place. So they were like, okay, we can't push him into something. Let him do something that he wants to. So they were like, let's not put more money into this. Classes का already ये हो रहा है. So no, they didn't force me to do any exams or whatever. And I was Okay. also happy कि मेरे को नहीं certificate नहीं चाहिए मेरे को. मतलब I'm just playing it for fun. ओके। So सो 11th 12th में म्यूजिक आपने कैसे परस्यू किया? 11th 12th में थोड़ा सा ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा शट डाउन ही हो गया था बिकॉज हॉस्टल में था. तो हॉस्टल में आई डिडंट हैव माय ड्रम किट. द स्कूल वाजंट बिग ऑन को करिकुलर्स. दे वर बिग ऑन स्पोर्ट्स दो. स्कूल का क्या नाम है? डिवाइन चाइल्ड स्कूल. डिवाइन चाइल्ड। डिवाइन चाइल्ड स्कूल, या. ओके ओके। दे हैड अ गुड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बट म्यूजिक डिपार्टमेंट वाज वेरी कुछ भी था वो. ओके। तो वहाँ पे उतना कुछ हो नहीं रहा था मेरा. म्यूजिक रूम था, वहाँ पे ड्रम्स थे. तो आई वुड आस्क चिन्मय सर एक थे, तो उनको मैं बोलता कि मेरे को आना है सीखने के लिए. एंड ही इज लाइक हाँ आ जा, तेरे को सिखाता हूँ मैं. नाउ ही इज अ तबला प्लेयर. ओके। उनको बस ड्रम्स दे दिए थे स्कूल ने कि भाई ये भी तुम देख लेना. So he doesn't know how to play. He didn't know how to play the drums, which I didn't know that. I didn't know what to expect. So I went and he's like, हाँ चल दिखा मुझे तू क्या बजाता है. And then I played some. And he's like, अरे यार तू तो बहुत अच्छा बजाता है. चल एक काम कर, तू मुझे ड्रम्स सिखा, मैं तुझे तबला सिखाऊंगा. मैं बोलता हूँ भाई मेरे को तबला नहीं सीखना है. And मैं तुमको क्यों सिखा रहा हूँ. So सर मैं सीखने आया हूँ यहाँ, आप भूल रहे हैं. I was like, I've come to learn. Why are you asking me to teach you? Yeah. So then I was like, okay, यहाँ तो मेरा कुछ नहीं होने वाला है. So over there, the only music thing I did was assembly में बजा लेता मैं bongo, because drums तो लेके आने वाले थे नहीं वो लोग assembly में. Assembly is just harmonium. एक music sir गा रहे होते हैं. पता है आउटफ्लाई मेरी असेंबली भी ऐसे होती थी. हाँ this is हारमोनियम. Yeah. और एक साथ में वो नहीं होता है डफली जैसा कुछ होता है. Some वो हो percussion. गया. Yeah. हाँ बस इतना. Yeah. That's exactly how it was. The school was very timeless in that aspect कि भाई 20 साल पहले भी वैसा ही था, अभी भी ऐसा ही होगा शायद से. हाँ तो आप अभी विजिट करने नहीं गए हैं रिसेंटली? It's near Mehsana. Mehsana is my mom's native. Mehsana. Mehsana, हाँ Okay. छोटा सा टाउन है. ओके. तो वहाँ ही कम जाता हूँ मैं. लाइक मॉम के घर ही कम जाना होता है. Okay. सो व्हेन आई डू गो देयर आई ट्राई टू विजिट द स्कूल इफ इट्स पॉसिबल. अच्छा. इट्स नॉट टू फार. सो हाँ बट हाँ बहुत टाइम से नहीं गया मैं अभी. तो ये म्यूजिक प्रोडक्शन और साउंड इंजीनियरिंग पढ़ाई करने का आपने कब सोचा? पेरेंट्स तो आपको 10th से ही शुरू हो जाते हैं बच्चों को बोलना कि भाई अब डिसाइड कर लो क्या करना है, उसी के हिसाब से आगे कॉलेजेस में अप्लाई करना होगा. तो ये आपके साथ नहीं हुआ? ये होके खत्म हो गया था. अगेन इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स दैट माय पेरेंट्स अटेम्प्टेड इट, फेल्ड एंड गिव अप. What did you do that they failed in convincing you to study something else, not music? 8th स्टैंडर्ड में मैंने जब ड्रम्स सीखना स्टार्ट किया, उसके पहले आई हैव ऑलवेज बीन अ पेंटर. आई यूज्ड टू पेंट एंड ड्रॉ ब्यूटीफुली. मल्टी टैलेंटेड है आप. आउटफ्लाई क्या क्या अब नहीं, करते हैं? अब मेरे से सर्कल तक ड्रॉ नहीं होता. लेकिन ओह. तब मैं एज अ ह्यूमन लाइक आई वुड डू लाइक कैरिकेचर्स एंड दैट काइंड ऑफ तो स्टफ. कोई ना कोई आर्ट आप छोटे से ही हाँ. कुछ ना कुछ तो आप कर ही रहे थे. पेंटिंग, ड्राइंग. Mainly painting and all. Mainly painting. Yeah, I wasn't too big on sports. Okay. So it was mainly painting and drawing that I used to do, and that's what I was known for in school and stuff. अच्छा. तो फिर क्या हुआ कि on the basis of that, on my very limited knowledge of the world, I decided कि मेरे को architecture करना है because I'm good at drawing and painting. अच्छा. Which is something I'm sure a lot of kids think at that age. Okay. So तब ऐसा होता था कि for architecture you need to take science. तो मैंने 11th में साइंस लिया. पूरा साल फेल हुआ हूँ मैं, एक बार भी पास नहीं हो पाया. कैन यू इमेजिन लाइक none of the subjects I've passed even once. The whole year physics, chemistry, maths, computers fail. English में खाली पास होता था. My God. I would fail the whole year and just destroyed my self confidence completely. And the hostel था तो टीचर से भी उतनी डांट पड़ रही थी ये वो. तो बच गए लेकिन आप कि आपके पापा मम्मी यहाँ नहीं थे, वरना पिटाई भी होती डांट के साथ. नहीं होती, because when I decided to go to India and study in a hostel, B choose science. हाँ.
My dad was like, both these things are not going to work for you because you're living in a very safe, protected environment. वहाँ जाके it's a open world. You may not be able to adjust. And B, तू मेरा बेटा है, तू कॉमर्स ही कर, तू साइंस नहीं कर पाएगा. Like, कर ही नहीं पाएगा. हाँ, so the thing is, mom's side of the family is all science students and all like, अच्छे मार्क लाने वाले सब लोग. डैड के साइड पे सब कॉमर्स एंड सब bare minimum मार्क वाले, like बस just पास हो गए बस. And that's what he expected of me as well. He didn't expect much of me. So when I was failing the whole year, एक vacation आया right before the final exam, in which I quickly made a visit to Muscat to meet my parents. And डर के मैंने उनको बोला कि यार science नहीं हो रहा है मेरे से. I don't want to do architecture also now. I don't know what I'll do, but I don't want to do this for sure. Okay. तो डैड like मैं तो तेरे को बोल ही रहा था. So then he made a special request to the school. तो उन्होंने बोला कि ठीक है, देखो roll number और वो सब change नहीं होगा, hall ticket वो. So he'll be giving his exam sitting with science students in the final board exam. So dad is like best है, copy भी नहीं करेगा. I'm sitting with science students. So आपके लिए एक्सेप्शन किया गया. हाँ. अच्छा. एक चांस मुझे दिया गया कि भाई चलो कॉमर्स, एंड कॉमर्स में जाके मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप कर दिया. अरे भाई. जो पूरा साल फेल हो रहा था, मैं नॉर्थ गुजरात में 3rd आया. वाओ. उसके बाद वो स्कूल ने इतने एडमिशंस बेचे मेरे नाम के कि वी अंडरस्टैंड एप्टीट्यूड कि स्टूडेंट का क्या होता है स्किल सेट, एंड उसके बेसिस पे हम लोग देखो ये साइंस में पूरा साल फेल हो रहा था, इसको कॉमर्स में डाल दिया, इसने डिस्ट्रिक्ट टॉप कर लिया. And my photo was up in the school and all. Wow. So yeah. Wow. So but kudos to your parents, to your father especially, for recognizing कि ठीक है नहीं हो रहा साइंस, जाने दो. Yeah. They've been very like after a certain age, like 7th 8th standard, मतलब वो जो थोड़ा स्कूल वाला एज था, उसमें वो लोग डांटते थे कि भाई मार्क्स आने चाहिए अच्छे, ये करो ये वो. The minute I became somewhat like adolescent और adult बोल सकते हैं, तो उसके बाद उन्होंने छोड़ दिए कि you figure. Okay. And that's been my biggest strength, that I don't have to give anybody any explanations at home कि मैं ये कर रहा हूँ, कि ये क्यों कर रहा हूँ, कैसे करूँगा, what if I fail. None of these questions are asked. So that's, I think, the biggest support. Like support is not usually, it doesn't come in the form of कि dad हमेशा पूछते रहेंगे कि अच्छा अब क्या कर रहे हैं, you want me to help you, you want me to connect with some people and all that. For me, support is just let me be. Stay out of my way. Don't like, एक और अड़चन तुम मत बनो कि भाई सबको ऐसे ही दुनिया को कन्विंस करना पड़ रहा है. हाँ. तुमको भी नहीं कन्विंस करना पड़े, तो that's a big thing. ये तो बहुत बड़ा सपोर्ट है आउटफ्लाई. Absolutely. आपके पेरेंट्स अगर आपके ड्रीम्स समझते हैं या ये समझते हैं कि भाई एप्टीट्यूड एक चीज होती है और एक में नहीं है, दूसरे में है, और वो मौका हमें दें, तो ये बहुत बड़ी बात है. बिल्कुल बिल्कुल. So that's 100%. fantastic. Yeah. So you came to Mumbai and then you were thinking about कि अब करें क्या. हाँ. तो अब मैं श्योर नहीं था कि म्यूजिक करना भी है नहीं करना है, लाइक पता नहीं क्या करना है. I really don't know. So dad is like, okay, do one thing, take up some normal course, like an easy course that you can finish quickly, and then do whatever you want. And since you have good marks, you can get a good college here. So I went to NM college, which was the shit back then. कि NM college मतलब अच्छे marks आए तो तुम NM जाओगे, because NM में तो सब top के बच्चे आते हैं एकदम. तो I had the marks for it, so I joined NM college and I did BMS, which is like it's a commerce course. It's like BBA. Mumbai का version है वो. NM and most colleges in Mumbai, they are very big on like college fests and all of those things. Inter college events वगैरह जो होते हैं. So I got involved in that. Like हमारे college का जो fest था, I was also part of like the organizing team of that, but also going to other colleges and participating in their competitions and doing all of that. तो band events होते थे. Band events was my thing कि okay, I would form a band in college, find singers and all that, and go to another college and perform and mostly win and वो सब. तो वो सब चीज़ें जब होने लगी तो फिर मेरे को realize हुआ कि okay, A, there are people doing music around here, so I can do this, and B, ये जो पढ़ाई है ये तो नहीं करनी है मुझे. Whatever that is, like it got clearer and clearer with time. ये क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है कि किस में मजा आ रहा है और किस में नहीं आ रहा है. वो आ गई आपको. And it was like a systematic decline in grades जो दिखता था कि मैं 12th में अभी just top करके आया हूँ, so I'm in that studying वाला zone. So मेरा first semester in college I got an A. 6 semesters होते हैं. I can show you my mark sheet. My marks, my grades were like A, B, C, D, E, and final वाले में मेरे को एक में KT लग गया तो technically F.
बाप So it was A B C D E F. ओके And that's how my interest just like gradually. सबको क्लियर हो गया है कि ये नहीं करना, खाली आपको क्लियर नहीं हाँ. हुआ, सभी को ये पता चल गया भाई इनको ये He तो is नहीं not, करना yeah, है. yeah. हाँ. Like second year onwards in my class, everybody used to like see me as the outcast kind of person कि भाई ये क्यों ही है इधर, मतलब why is he coming here and wasting his time and wasting a seat. कोई और बच्चा आके ये सीट पे बैठा होता और वो पढ़ रहा होता और इसका कुछ utilize करता. The minute college was over, I had it all figured out. Like I had gone to a particular recording studio with one of my bands. मुझे बोला गया कि भाई हमको recording studio बुलाया है गाना रिकॉर्ड करने, and मैं हवा में चल रहा हूँ कि अरे हमको कोई बुला रहा है रिकॉर्डिंग स्टूडियो में. ये तो बड़ी बात है. फिर वहां जाके मैंने देखा कि सीन क्या एग्जैक्टली, मैंने थोड़ा समझा. तो उसने बोला कि दिस इज माय असाइनमेंट, आई एम बीइंग ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड यू गेट अ फ्री सॉन्ग व्हिच इज रिकॉर्डेड इन द स्टूडियो एंड ऑल दैट. आई एम लाइक ओके कूल. I spoke to him more कि what is this audio engineering course that you're doing and all that. He gave me more details on that. As soon as I finished my course, I joined that same institute doing the same course. Oh, Yeah. okay. Even then, like I didn't have a blueprint of what I need to do आगे, but I was like, okay, this is the start. हाँ, of course, शुरू तो हो ही गया Yeah. था और ये एकदम से नहीं हुआ. Yeah. बहुत सी चीजें आपने ट्राई की, उसमें फेल हुए, उसके बाद जाके पता चला कि ये एक चीज़ है जहाँ शायद मन लग जाए. Correct. तो ये बड़ी बात है कि जो चीज़ें हमें कही जा रही हैं कि ये करके देखो, करके देखी गई, ऐसी डिसमिस नहीं कर दिया और उसके बाद पता चला कि ये नहीं करना है. सो दैट इज़ ऑल्सो, आई थिंक दैट्स कमेंडेबल आउटफ्लाई, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये मौका नहीं मिलता है कि आप करके देखो कैसा लग रहा है. Yeah. और ज़्यादातर यही होता है कि बेटा यही करना है आपको, हाँ. यही करना है और 10 साल तक ट्राई करते रहो. तो वो तुम्हारे साथ हुआ नहीं. नहीं वो नहीं हुआ. वो एक बार ट्राई किया, समझ में आ गया, एंड योर पेरेंट्स वर सो सपोर्टिव, Yeah. एंड देयरफॉर you had this opportunity of joining a music school as what course did you do? It was just a diploma in audio engineering. ऑडियो इंजीनियरिंग. Yeah. तो ऑडियो इंजीनियरिंग और म्यूजिक प्रोडक्शन, इन दो तो अलग चीजें हैं. अलग चीजें हैं, but they do go hand in hand in some ways. So when you do audio engineering, you study first of all you study the physics of sound. Then you study the physics of the human ear, कि पूरा जो कान है उसके क्या क्या parts हैं, which part is doing what. And now that you know the physics of sound, you know how sound coming from any source is interacting with your ears. So first you learn that, then you learn how to operate software, how to record, how to set up mics, all of those things. And mainly when you learn how to use a recording software, like an audio production software, audio recording software or whatever. And if you are a musician, तो तुम्हें you can translate your knowledge of music and you can translate your knowledge of software, like combine the two and you become a music producer. That's what a music producer is in today's day and age. कि पहले ऐसा होता था कि music, like the concept of a music producer earlier back in the day was like a guy who hires other instrument players and figures out their parts, क्योंकि you play this, you play this, you play this. So arranger एक होता था, एक producer होता था. So there were too many roles वैसे. Now these lines have sort of been blurred, that anybody is doing anything. जिसको जो आता है वो कर सकता है. So many of the musicians that we know today are a one-man army, कि वो लोग खुद ही produce करते हैं, they record themselves, they mix their own songs, all of that. That's the space I saw myself in. I bought myself a ukulele and I was playing, like learning how to play that. फिर वो सब मैंने YouTube tutorials वगैरह से सीखा. Then I'm like, okay, now I've learned how to play a tone-based instrument. Now I need to learn how to sing also. Okay. So singing थोड़ा बहुत सीखा. There was a girl in my college who used to teach, like she used to take vocal lessons. Okay. So I took a few lessons from her back in the day. And वो सब थोड़ा सीखा. And then I felt like, okay, I should probably know a little bit of every instrument. Not knowing why, कि क्यों मुझे ये जानना है पता नहीं, but I was like, okay, I'll try out. So every time I would have some money in my hand, I would buy some छोटा मोटा, buy a xylophone, buy a ukulele, a djembe. So I bought myself a guitar at some point. Guitar उतना मुझे पहले मज़ा नहीं आता था, because like the strings were hard to play and it was kind of painful. But once I had learned how to play the ukulele, I could translate that playability, like the knowledge and everything to the guitar, and then it helped. So by the time I decided to do audio engineering, I had tried my hand at a bunch of different instruments, so I knew thoda basics of music theory and wo sab. So once I learned how to operate software, I'm like, okay, I know software, I can sing, I can play some instruments, and the rest I can program because I know music theory. What does that make me? Music producer. Okay. That's how it sort of happened. Okay.
It wasn't a plan to be a music producer. I was learning audio engineering to be an audio engineer, like handle and operate a whole studio, record other people, all that. वो भी किया मैंने बहुत time, like for work. That's what I did later for the most part. But then I was like, okay, I need to do my own thing now because अब मुझे ये भी आता है, वो भी आता है. So yeah, that's how it started. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आउटफ्लाई कि आपने एक्सप्लोर किया, एक के बाद एक अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर की और उससे आपको इतना कुछ समझ में आया अपने बारे में बिल्कुल। और जो आप करना चाहते हैं उसके बारे में. तो आप ऑस्ट्रेलिया कब गए और क्यों गए? My professor here in Digital Academy, he had studied in Australia. ओह, So he told me that it's a nice place to study and live and everything. ओके, So I went there. I did a 2 years course in music production and audio engineering. It was like a अच्छा. combined course sort of thing. ओके, Yeah. So that was 2018 to 2020. अच्छा. तो फिर वहाँ क्यों नहीं कंटिन्यू किया, वापस आप इंडिया आ गए? यार लॉकडाउन हो गया वहाँ पे. हाँ, So लॉकडाउन होने से क्या हुआ कि there weren't enough jobs in the market. ओके, Like in a market where people were losing jobs at the time, I was finishing my course and I had to find a job. And I tried it all. I've literally done walk-ins. Like I printed like 100 resumes, and I exhausted them in 3 days because that's the number of places I've walked into, had a conversation with whoever was at the front desk, and given them my resume. And there were like separate resumes. Like there were some for like audio work, which I would send out to like radio stations and small audio like shops that sell equipment and all. I'm like, any job will work. There was a separate resume I had made for like hospitality stuff जिसपे मैंने सब fake किया था कि मैंने ये experience किया है वो experience किया है to get like a job at a restaurant or something. I just wanted some job. Got a job at this Mexican fast food chain, but they fired me in 3 days because I was very slow. Oh my Because I obviously God. have no experience like making burritos. I had nothing to do. I was doing Uber Eats for a while. I was delivering food and stuff you were delivering food? Yeah. How? Like, on a bicycle. really? Yeah. Okay. Yeah. I did that for a long time. And over there, like, so Melbourne का ऐसा है कि the cycling culture over there is very nice. अच्छा. कि every place has a bike path or a cycling lane at least on the main road if that is the case. So हर जगह like cycling का like you can get anywhere by cycling. The roads are always made for that. अच्छा. So there are so many people who go to their like corporate jobs on their bicycle. So they're just wearing their spandex, whatever, and they're cycling. They go to the office, change or even take a shower. Offices have shower, like even colleges have showers over there for this exact reason. Oh. Ki cyclists will come, take a shower, freshen up, and then go to your class or something. Wow. Yeah. That's crazy. So I had that's another thing I had done my research on before I moved there. कि मेरे को वहाँ जाके I want to be a cyclist. I want to go everywhere by cycle, not use tram, not use bus, no public transport, whatever. I'll cycle to wherever. Okay. So 3 months in, I bought my first cycle and I started cycling. So initially, I was staying just 3 kilometers away from my college, हाँ. which was in the city. So city में है तो महंगा भी है और छोटा घर भी है. हाँ. But as my cycling stamina increased, I kept moving further away from my college. And my last house that I was in was like some 11 kilometers from college. Okay. So 22 kilometers तो मेरा back and forth ऐसे ही हो जाता था. हाँ. Without any like struggle. It was very comfortable. Okay. Cycling एक point के बाद ऐसा तुम्हारा body tune हो जाता है कि तुम 5 किलोमीटर चलाओ 50 थकान तुम्हें वो सेम ही होती है. It's I don't know, it's a thing. Okay. So I would cycle to everywhere, and then since the whole job thing wasn't working out, I would see that most people are doing Uber Eats on bicycles over here. Okay. गाड़ी में Uber चलता है. Bikes उतने हैं नहीं वहाँ पे, so either they have these e-bikes or something. So again, that's in they run in the cycling वाला lane. So उन पे Uber Eats वगैरह बहुत ज़्यादा लोग कर रहे थे. So I was like, fuck it, there's nothing else to do. I'll do this. So I registered on Uber Eats and I started delivering food. And then it became a fun thing for me कि मैं करते रहता था, म्यूजिक सुनते रहता था, खाना डिलीवर करते रहता था. Would do like 6 or 7 deliveries every day, and अच्छा. that sort of covered rent for me and a few other things. अच्छा. Main वही था कि like because I was there, like my dad was paying for my education. He until that point he was also paying for my stay and everything. He was basically sending me money for all my expenses. I'm like, I want to find a way to first stop this. तो आपने खुद ये डिसाइड किया कि यू वांट टू फाइंड अ वे टू स्टॉप दिस. Yeah. ऐसा नहीं कि घर से पैसे आने बंद हो बिल्कुल गए. नहीं. ये आपके मन में खुद आया. Yeah. ये तो बहुत अच्छी बात है. My parents never Yeah. yeah, my parents never told me कि नहीं तू find a job and whatever. Even when I decided to come back, I told them like, listen, I am very depressed here क्योंकि lockdown है. My friends all live away. You're not allowed to exit a 5 kilometer radius. उधर rules बहुत ये थे.
And my studies are also happening online, which is basically worthless because how do you study audio, like studio stuff, without being in the studio? Yeah. So I was like, this is not making sense. Let's pull the plug here. I'll come back to India. I'll see वहाँ पे क्या करना है and all. So I was like, no, I'll come to India. And once I land in India, life figures itself out. Mumbai, मतलब India, मतलब Mumbai. मेरे लिए मुंबई है India. I love living here. I'm probably going to live here for the most part. So I was like, मैं मुंबई चले जाता हूँ. मुंबई जाके मैं कर लूँगा figure out. तो मुझे एक बात बताइए, ऑस्ट्रेलिया में जैसे आपने बताया लॉकडाउन हुआ, सब दोस्त दूर थे, तो वो वक्त कैसा था? मतलब वो वक्त तो बहुत ही बुरा था. बुरा था. Because वहाँ पे ये सब हो रहा था कि like the Australians were like hoarding groceries and all that. So like even when I would want to go to a grocery store first thing in the morning to buy my groceries, because तब you would hope कि भाई सुबह अभी खुला है तो और अभी क्या कुछ ना कुछ तो मिल ही कुछ ना जाएगा. कुछ तो मिल ही जाएगा. Even at that hour, there would be a queue to get into the store because they were allowing only a certain number of people into the store. Of course, that was everywhere. Yeah, distancing and all that. And even when I would go inside, there's nothing there. Like shelves are just empty. तुम्हें biscuit, instant noodles ये सब चीजें मिल जाएंगी. कचरा basically. Okay. Fresh fruits, fresh vegetables, fresh meat. You would not find any of these things. Okay. Commonly जो चाहिए होती है. So I remember this one week it got really bad कि I had to just survive on instant noodles. Oh, 1 week? Yeah. 1 full week? घर पे जो था थोड़ा बहुत वेजीज वो सब था, but like yeah, that whole week I couldn't find any groceries properly. God, that must have been so tough, yeah. Yeah. So And you were cooking your own food. हाँ वो तो वहाँ पे you can't afford a cook तो and all पहले that. से आता था बनाना? पहले से आता था बनाना. अच्छा. I had learned how to cook while I was in Mumbai only. Okay. ऐसे दोस्तों के घर पे मतलब ऐसी पार्टी कर रहे हैं तो खाना बना रहे हैं सब लोग मिलके. क्या बात है. हाँ. तो मैं इसको पॉइंट आउट करना चाहूंगी अलग से कि आउटफ्लाइन म्यूजिक ने खुद खाना बनाना सीख लिया अपने आप, अपने मन से. ये नहीं सोचा कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो जो आएगी मेरी वाइफ वो मेरे लिए खाना बनाएगी. ठीक है. No, Yes. that's not something you can think these days. Thank you so much for that. Arre, of course, of this course. is I think please guys get inspired, okay? Learn. inspired, It's a survival skill for survival. It is. You have to, I mean, you should learn to cook and clean for yourself. Huh. It doesn't matter if you're a Cook. man or woman, how old you are, it really Yes, doesn't matter. It doesn't matter. Cook and clean for yourself, please. Yeah. Okay, yes. Good job, good job. Yeah. So, हाँ, so you were asking me कि वो time फिर कैसा कैसा था overall? था, So it was हाँ. very, बहुत ही grim था honestly. कि किसी को मिल नहीं पा रहा हूँ. I'm living by myself in that last house that I was in. So I don't have a housemate. My friends all live outside of a 5-kilometer radius, so I can't go see them. Okay. You are anywhere allowed to step out only for 2 reasons: for procuring grocery and for exercise. अच्छा. Exercise मैं करता नहीं था. ग्रोसरी के लिए जाना होता तो ग्रोसरी में कुछ मिलता नहीं था. तो लाइफ इतनी पॉइंटलेस लगती थी. मैं एक दो बार आई वाज लाइक ओके चलो एक्सरसाइज के नाम पे बाहर चले जाते हैं. आई वुड गो आउट फॉर अ वॉक, बट तब द पैरानोया वाज सो हाई दैट इफ एनीबॉडी वुड वॉक इवन लाइक स्लाइटली क्लोज बाय, मतलब वुड पास मी, आई वुड गेट स्कैर्ड कि अरे शिट, मतलब इतना नजदीक से नहीं चलना चाहिए मुझे. तो 2 बार मैं गया चलने, उसके बाद मैं बोला मैं चलने भी नहीं जा रहा. आई एम गोइंग टू स्टे एट होम ओनली. आई स्टेड एट होम फॉर अ गुड, I think 5-6 months, and it did not seem to be going anywhere. Okay. मतलब था कि भाई पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है, जॉब वॉब मिल नहीं रहे, इंडिया तुम जा नहीं पा रहे बिकॉज फ्लाइट्स नहीं है, एंड देयर इज जस्ट नथिंग, यू आर हियर. So emotionally वो वक्त कैसा था आपके It लिए? was very draining. मतलब imagine you're forced to, like, if you're in a city, if you're in a normal environment where you have friends, you have family, you have places to go to, you have things to eat, places to be, all those things, escape बहुत easy हो जाता है. हाँ. कि तुम्हें यहाँ बैठे बैठे कुछ चीज अगर खटक रही है, तुम्हें बुरा लग रहा है किसी बात को लेकर, तो तुम ये एनवायरनमेंट चेंज कर लो, तुम किसी और के घर चले जाओ, बाहर चले जाओ, कुछ खाने पीने, मूवी देख लो जाके, कुछ तो करो. यहाँ पे तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारे साथ बात करने के लिए कोई नहीं है. वीडियो कॉल पे तुम जिनसे कनेक्टेड हो वो है, बट अदर देन दैट देयर इज नो फिजिकल प्रेजेंस ऑफ अनदर पर्सन. देयर इज नो होप कि भाई थिंग्स विल गेट बेटर नाउ, और कि कल को जॉब मिल जाएगा ये वो. So there's no hope. So you're just like forced to be in a room with your feelings. That's it. There's no escaping. So that was the first time in my life that I experienced something like that. कि फिर तब मुझे realize हुआ कि okay, I've been escaping
my feelings this whole time. My entire life I've just been running away कि okay यहाँ हूँ, इस इंसान से बात किया, उसने कुछ गलत बोल दिया, बुरा लग गया मुझे, okay environment change, दोस्त change, you know पूरा ये सब change. So that couldn't be done then. कि जो भी बुरा लग रहा है वो लगेगा ही, वो यही है, वो कहीं नहीं जा रहा है और तुम भी कहीं नहीं जा रहे You हो. have to go through You have it. to go through it. Go through the pain of Yeah. it. So तब मैंने थोड़ा इस पे ये करना चालू किया कि रिसर्च करना चालू किया कि like how to overcome sadness and these were my Google searches back then. How to overcome sadness. Yeah. So जो भी उसमें आया थोड़ा बहुत कि ये करो वो करो, you have to process the feeling and you know processing is what some like most of them emphasized on. फिर एक point पे it was too hard to just do it by myself, so I started taking therapy. Okay. Yeah. Okay. And that helped a lot. So Therapy helped you. Yeah. So my therapist was based in Mumbai then, and she really helped me. Like she, But you were in Australia Yeah. and your therapist was in Mumbai. yeah. But at this time, आपके parents से आपने इस बारे में बात की? I didn't feel comfortable talking to them about these things until that year. Like 2021 is when I came back, and that whole period had also kind of strained my relationship with my dad a little bit. Okay. So I came back and I came like when I went to Muscat, I went with the intention of fixing my relationship with my parents and also coming clean to them about a lot of stuff. Okay. Ki okay, now I'm an adult. I shouldn't have to be like I shouldn't have to hide so many things from you. कि अगर मैं depressed हूँ, because that's something we all feel apprehensive about ना कि parents को बताएंगे depressed हो ये सब तो कैसे react करेंगे, क्या बोलेंगे पता नहीं. Therapy वेरेपी तो बोल दिया तो उनको लगेगा तुम पागल ही हो गए हो कि क्या हो गया क्योंकि इसको. हाँ acceptance नहीं है हाँ इस चीज अभी तक उनका उस जनरेशन में उतना अवेयरनेस नहीं है कि भाई थेरेपी इज so essential and so life changing. So you believe that therapy can be life changing Yeah. and it is essential. Yeah, I didn't believe it until that point. I always thought कि अरे मैं तो नहीं होऊंगा डिप्रेस यार, मेरे को क्या ही हो जाएगा. तो when I reached that stage, I'm like, okay, maybe this is what it feels like to be depressed. Wow. And maybe now I think तब मेरा दिमाग automatically ऐसा कि therapy try करना, why not? So I tried it with no expectations. I was like, let me just surrender to this person and let me just tell them everything about. You surrendered. Yeah, I surrendered. That's the most important thing. कि हम थेरेपी ले रहे हैं लेकिन हम पूरी बात बता नहीं रहे हैं तो वो मदद नहीं करेगी. और ये भी सोचना कि थेरेपी ले लेनी चाहिए क्योंकि हमें अपनी मदद करनी पड़ेगी क्योंकि एक जिंदगी जीनी है यार. बिल्कुल. और खुशी से जीनी है. तो थेरेपी इज ओके. तो वो एक्सेप्टेंस एंड देन सरेंडर, दैट्स वंडरफुल. Everybody should get therapy. I feel Yeah. like everybody should at least give it a try just for the experience of it. कि तुम एक बार एक therapy session लो with a therapist that you know of and have heard of. Like, you know, I mean, now it's like there are also a lot of bad therapists out there. ये बहुत लोगों से सुना है कि it's not working out with my therapist. I need to change my therapist. ओके. मैं बोला यार इसमें भी यार थेरेपिस्ट के साथ भी नहीं जम रहा है, ये भी चेंज करना पड़ रहा है. that's troublesome. So yeah, make sure you find a good therapist and maybe do one session, just see how it feels. या क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी हर जो इमोशनल टर्मोइल जो अंदर हो रहा है हर कोई एक तो समझ नहीं पाएगा आपको. ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि मैं जो महसूस कर रही हूँ मैं शब्दों में भी अगर बता रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है अगले बंदे को समझ में आए. एंड जरूरी नहीं है कि तुम्हें क्लैरिटी हो कि तुम ये फील कर रहे हो. Absolutely. Your feelings could be like misguided or like it could be coming from somewhere else, but you think it's coming from here, but it's coming from there. Yes. तो वो भी हो सकता है. So therapy also helps you get clarity of like the origin or the source of the Problem, that feeling or feeling, that problem. Yeah. Also मैंने कई बार लोगों को सुना अपने दोस्तों से बात करो तो मैंने दोस्तों से भी बात की है और मैंने ये पाया है कि उनकी नॉलेज जो इमोशंस के बारे में है वो भी वही है जो मुझे है. Yeah, वो exactly. कुछ आउट ऑफ द बॉक्स या कुछ अलग रूट कॉज पे जाकर वहाँ से प्रॉब्लम का सोर्स निकालकर मुझे बताने में वो भी असमर्थ हैं क्योंकि उनको खुद नहीं पता है. हम एक ही थाली के तो चट्टे बट्टे हैं. You are a sum total of the people you hang out with and everything, no? Yeah. So तो एक अलग पर्सपेक्टिव मिलना बहुत ज़रूरी है जो ना हमें दिख रहा है ना हमारे दोस्तों को दिख रहा है और हमारे पेरेंट्स को तो बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं है पता ही इसके नहीं, बारे में. exactly. उनके लिए एलियन चीज़ है कि अरे थेरेपी उसकी क्या ज़रूरत है, आओ खाना खाएं बैठ के. हाँ. जाओ बढ़िया खाना खाना खा खाओ, के सो आओ. जाओ.
हाँ अच्छा खाना खा लो, उससे ठीक हो जाता है सब। नींद अच्छी होनी चाहिए, नींद अच्छी होनी सुबह जल्दी उठा करो। हाँ हाँ, और हमारे साथ Wake up at 10 a.m. हाँ, सॉरी 10 a.m. बोल रहा हूँ, 10 a.m. तो बहुत ही 7 लेट हो 7 गया। हाँ 6 6 7 a.m. हाँ, दैट इज इनफ। yeah. हाँ, तो ये उनका पर्सपेक्टिव है, वो भी गलत नहीं है क्योंकि उनको यही पता है। Yeah. तो एक थर्ड पर्सपेक्टिव जो कि एक एक्सपर्ट का पर्सपेक्टिव हो, वो बहुत, मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। जब आपके हाथ से बात निकल गई और आपने वो महसूस किया बिल्कुल। एंड यू टुक हेल्प, दैट्स ग्रेट। फिर क्या हुआ? तो सो थेरेपी डेफिनेटली हेल्प व्हाइल आई वाज देयर। आई थिंक 2 या 3 महीने मैंने वहाँ पे किया होगा। द लास्ट 3 months that I was in Melbourne, I was on therapy. The minute I landed in Mumbai, एक तो तब तक इतने सेशंस हो चुके थे कि आई हैड माई होमवर्क कि मुझे ये चीज़ों पे काम करना है। वो मेरा ऑलरेडी मुझे पता चल गया था। तो कुछ शेयर करना चाहेंगे, ऐसा क्या था जो some one aspect of the whole thing? Well, the most important thing was that don't run away from your feelings. If you're feeling sad right now, like sit in it, feel as sad as you can. मतलब रोना आ रहा है तो रो लो, रो लो, चिल्लाना है तो निकाल लो, चिल्ला get it लो। out of your system. Get it Because out there of your will, system. yeah, there will come a point when you can't possibly cry anymore. You will like बस हो गया। अब मैं चाहता हूँ रोना, बट मैं निकल नहीं रहा है वो, because वो हो गया खत्म। So you kind of need to finish that journey of that emotion. That every emotion has a whole ये ना timeline की, okay, how it starts, when it peaks, when you start moving on from it, and then it ends. That needs to be completed. You can't ignore it because वो आज नहीं तो कल खुलेगा कहीं ना कहीं. You're gonna feel that emotion somewhere. If you go through, let's say, example देके बताता हूँ कि if you go through a breakup today, in order to not feel that sadness, you immediately start seeing somebody else. In that moment you will be like, okay, ठीक है, I'm feeling good now, ठीक है, ये नहीं तो वो वैसा. But when you break up with this person as well, and then you can't find another person, let's say, then you will feel the sadness of 2 breakups at once. Yeah. And I'm saying this because I've done exactly this. I was Okay. young and immature. No, This is no, way but back. it takes a lot of courage to share. Yeah, Thank yeah, you yeah. for sharing this. So that's something I realized that I've always been doing. Ki I run from one thing to the other, whether it's relationship, whether it's friends, whatever. कि एक जगह नहीं जम रहा, दूसरी जगह भागो without even completely having processed what happened here, why you're leaving, like all of those things. So yeah, just complete the process of your feelings. Complete करो उसको, फिर उसके बाद तुम्हें और clarity मिलेगा, and you will automatically feel better. If you try to suppress everything, that's not going to work. So that's one thing that was taught to me in therapy. Other than that, it was about managing your expectations from another person, because most of my conversations in that phase of therapy were about my last breakup and how that's affecting me. And then other than that, the fact that I'm alone in Melbourne, stuck in this house in lockdown, not able to go back to India, all that. But it started off with the whole relationship talk. I just went through a breakup and I was dealing with that. तो ये managing your expectations of another person, इसके बारे में कुछ Yeah. बताएंगे? So it's very different for every person. Of course. So for me, my expectations can be so many, but at the same time, I would be okay if they're not fulfilled. अच्छा. Like expectations होना कुछ गलत नहीं है, but how you feel when they're not fulfilled, when the other person is not conforming to your expectations exactly, how you behave then is important. So knowing to keep your calm, knowing to like realizing that they're not specifically trying to not match your expectations. It's not a deliberate thing कि नहीं तेरे expectation मैं नहीं match करूँगी. It's they're being themselves. So you need to know that, okay, this person can only do so much, or this person can't do these things. You need to understand those things about a person कि उनके boundaries क्या है, and तुम अपने boundaries समझो कि okay, these are non-negotiables for me, but these are negotiable. So इसमें अगर I have expectations about these things, but if they're not fulfilled, it's fine. It's totally fine. So conducting yourself in a situation where your expectations are not being met is very important, because your expectations are not going to be met a lot. Okay. A lot, like whether it's love life, professionally, wherever, friends, all of those things. Everywhere. Expectations तुम्हारे ख्याली जो है वो exactly वैसा नहीं replicate होगा in real life. So knowing how to deal with that is very important. That's something I learned in therapy back then. Wow, that's wonderful.
Then you came back to Bombay. Yeah. And उसके बाद आपका ये शुरू म्यूजिक का जर्नी यहाँ पे शुरू कैसे हुआ? So once I came back, I was instantly off therapy. I was like, मुझे अब therapy की ज़रूरत नहीं है. I know enough. I'm not saying I'm healed. I know enough to heal myself further. But now I'm in the company of friends. I automatically was feeling so much better. So कैसा हुआ कि I came back and I came back on a repatriation flight. वो वंदे भारत के जो flights चल रहे थे. हाँ. तो बेसिकली मुझे वहाँ से रेस्क्यू करके लाया गया है वहाँ पे. Okay. Because it was still in the middle of lockdown. So I came back here. I did my 14-day quarantine. On the 15th day, I went and met my two best friends, Shashank and Atharva. They are also audio engineers. वो मेरे यहाँ के classmates थे. तो उनको मैं मिला and they had moved in together while I was in Melbourne. Okay. तो मैं वापस आया यहाँ पे and उनके घर गया मैं उनको मिलने and they were like अब तू यहीं है. अच्छा. मैं बोला मतलब? They're like you're staying with us. I'm like I've just come back from Melbourne. I don't have any savings. I don't have a job right now. I need to look for a job and all that. They were like, did we ask you for money? Wow. You just stay with us because they knew that I had gone through a lot of shit in that past few months. So they were like, just come and live with us. So एक तो living with them and living that उस घर का जो lifestyle था कि वो दोनों सुबह उठ के काम पे चले जाते थे. Athar was a singer. He would do his riyaz before leaving for work. So we would, because he's doing riyaz, I would also wake up. Body clock उनके हिसाब से सेट हो गया कि हम लोग 6 बजे उठ जाते थे. चाय बनते बनते तानपुरा चालू है, भाई रियाज कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ and I'm just enjoying it. And then they would leave for work and then I had the whole day to myself to just do music and whatever. I would clean the house. I loved, keeping the house very clean. So he would clean the house. Yeah. He loves keeping the house clean. Arey, they were not taking rent from me, so I was like, the least I can do is A, keep the house clean, B, keep the fridge stocked. So I would take care of the house. मेरे आंसू आ रहे हैं. ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं आजकल? तुम किसी दूसरी दुनिया से आए हो यार, आप सच्ची में. Okay. तो फिर क्या हुआ कि तब मेरे पास जॉब कुछ था नहीं and I had just come back. So I'm like, okay, I'm not going to actively look for a job. Job आना होगा तो आ जाएगा. अच्छा. नहीं तो I'm going to spend this time healing and just enjoying my time. So I would wake up, इनके साथ चाय वाय बनाता. फिर मेरे पास पूरा दिन था कुछ नहीं करने के लिए. And we had a basic setup at home, like speakers and laptop and all. So I would make some music. Okay. And I would watch TV shows and I would eat and like cook some food and eat and just spend the whole day doing absolutely नॉर्मल घर का जो चीज़ें होती है. कुछ काम का नहीं कर रहा था मैं, टाइम पास कर रहा था एंड मज़े कर रहा था. आई डिड दैट फॉर 3 months. आफ्टर 3 months आई वाज लाइक ओके नाउ आई एम रेडी टू मेबी स्टार्ट वर्किंग, लुक फॉर अ जॉब और समथिंग. So then I started applying for jobs and that's when I got a job at this dubbing studio in, we're not naming them, chalo. But yeah, I got a job at a dubbing studio where we were recording, voiceovers and shows का English to Hindi dub कर रहे थे, वो सब चल रहा था. So I did that for a while, then realized that this is not the right place for me because I'm just doing audio engineering. Like there's no music to it, so there's no art to it. It's more of a technical job. So I quit that and again quitted with like no plan B कि आगे क्या करना पता नहीं. तो मैं चला गया कश्मीर ट्रैक करने. आई वॉज इन कश्मीर फॉर 10 days, डिड अ लॉन्ग ट्रैक विद माई ट्रैकिंग फ्रेंड्स. तो मैंने घर पे बोल दिया मैं 10 दिन गायब रहूँगा, डोंट बॉदर कॉन्टैक्टिंग मी बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू बी एबल टू आंसर. फिर मैं वापस आया, नेटवर्क जोन में जैसे आया तो मुझे 1-2 कॉल्स आए थे मेरे ऑडियो इंजीनियरिंग के प्रोफेसर के. आई एम लाइक इफ दिस पर्सन इज कॉलिंग देन इट्स सम वर्क स्टफ. So I called him back and he's like, "Arey Maharshi, listen, there's a studio that I've designed. He designed the studio, so he designs recording studios for other people and all. So he's like, एक studio मैंने design किया है which is in Borivali. They're looking for an engineer." I was like, "Stop! You had me at Borivali because I live in Borivali, so it was like really close to my house. So and they wanted an engineer to run the whole studio. It was meant to be a music studio rather than a dubbing studio. It was a very big space. So I was like, yeah, I'll take this job. So I left one job, went for a trek, came back, and in a week, my second job had started without me doing much about it. So I want to point out something here. So there's something called high life condition.
मतलब जॉयफुल रहना, खुश रहना। जब आप खुश रहते हैं, आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई होती है कि आपकी जो दिली तमन्नाएं हैं वो उसमें पूरी हो जाती हैं। तो Yeah. आपके बॉम्बे आने के बाद जो 3 महीना आपने मज़े किए हैं, Yeah. आपने एक्चुअली अपना मन और अपने दिमाग को खुश रखा है, बिल्कुल, राइट? yeah. उसके बाद जब आप कश्मीर गए, उसमें भी आप खुशी थे, तो आपने इतने टाइम खुशी क्रिएट की अपने लिए। Yeah. तो जब हम बहुत खुश होते हैं ना, तो सारी अच्छी चीज़ें हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल। And I'm not surprised that you did the things that you loved doing, and you spent this time in उसको बोलते हैं self love, Self-love, in yeah. self love, and this job came to you out of like nowhere. Nowhere. You had not applied for it, and it came to you. Yeah. So that had to happen. That had because to happen, I guess. you maintained your high life condition. That's Right. wonderful. Yeah. Yeah. फिर इस स्टूडियो में तो मैं भी गई हूँ, हाँ. और बहुत ही खूबसूरत था। मैंने 1-2 गाने अपने त्रिपुरारी के उसमें रिकॉर्ड किया, एंड यू रिकॉर्डेड मी, Yeah. सो इट वाज अ ब्यूटीफुल स्टूडियो। Yeah, that was fun. Yeah. Yeah, that was a good time. So I worked there for I think about another 6 months. Okay. So I spent 6 months at my first job, 6 months at my second job, and by then I was like, okay, I think freelance is the way to go, because now A, I have clients, B, I want to anyway move out from my house. I was living with my dad's family then, so it's a joint family of like 8 people. So I was like, I need to have my own space now, and I need to have a setup of my own where I can work and make music and stuff. So I was like, okay, now I have the clients. I anyway want to move out and build my own space. I may as well start doing what I'm doing, but on a freelance basis. So I took that leap of faith, and You took a leap of faith. yeah. वाओ, कितने आहा मोमेंट्स हो रहे हैं यार इस कॉन्वर्सेशन में। You took a leap of faith, and you know that it was a leap of faith because हमें एज फ्रीलांसर्स हमें नहीं पता होता हमें अगले महीने काम मिलेगा नहीं मिलेगा, कल काम मिलेगा नहीं मिलेगा। और ये हमेशा वो एक्शेल्स पे चलने वाली बात हो जाती है कि पता नहीं पैसा आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स तो हो नहीं रहे हैं। हाँ. और कोई ऐसा मंथली सैलरी या पैकेज तो है नहीं जो हमें मिल रहा है। हमें पता ही नहीं है कल क्या होगा। और ये जानते हुए you went into, you've come into freelancing. That is a leap of faith. That's wonderful. Yeah. I mean, देखो थोड़ा सा calculated risk था, I would say. So if I do 4 songs or 5 songs, I can cover my rent for a month. And I am doing more than 5 songs in a month. So I was like, अरे, I should have done this long ago. Okay. तो then थोड़ा सा कैलकुलेशन तो था। उसमें, हाँ. ये अच्छी बात है, ये करना चाहिए, हाँ. बिल्कुल करना चाहिए। Be practical, like don't just take a leap of faith into like things that you have not assessed the risk of at all. Don't do that. So because ये मुंबई है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट्स आते हैं जिनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं होता, जिनके पास पैसे नहीं होते, एंड दे रियली सफ़र, क्योंकि उन्होंने लीप ऑफ फेथ तो ले लिया पर ये कैलकुलेशन नहीं किया है कि आने वाले 6 महीनों में रेंट कैसे जाएगा और खाने के लिए पैसे होंगे कि नहीं होंगे। तो काफ़ी आर्टिस्ट सफ़र भी करते हैं, बट दैट डिडंट हैपन बिकॉज thank God it didn't happen because you had this calculation. Plus, I knew for a fact that okay, if like since I left my job at the studio, so did my clients. Like they stopped. They still work with me and not with them anymore. I mean, because whatever whatever the reasons. Yeah, they're comfortable working with me. Yeah. They like the way I record. Once I had that belief, I was like, okay, now I can go anywhere. So that goes to show that you have become that kind of a person that someone can come to and trust with their music. So that's commendable. मतलब kudos to you for becoming that kind of a person. और आपका ऐसे 7वें आसमान पे मैंने कई लोगों के साथ काम किया जो बहुत गुस्सा रहते हैं, तो उनसे बात करने में मुझे डर लगता है। पर आपके साथ मैंने काम किया है, आप वैसे नहीं हैं। आप मेरी बात सुनते हैं, मैं अपने आइडियाज़ आपको बताती हूँ तो उसमें आप कुछ और ऐड करते हैं अपना, और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो तो कमाल ही होता है। सो आपकी भी इसमें तारीफ़ है कि आप वैसे फ्रेंडली और समझने वाले इंसान आपने बनाया है खुद को, क्योंकि आप दूसरी तरफ जा सकते थे, आप बन सकते थे बहुत ही स्नूटी है, मेरी बात सुनो, अगर नहीं सुनोगे तो मैं नहीं काम कर रहा, वैसे बन सकते थे, बट यू चोज टू बी एन एमिएबल person who is good to work with other people, right? Yeah, so well, thank you for that, Outfly. You're welcome, but it's important to point out that I was not always this person. Okay. There was a time when I slightly started becoming that person कि जो ऐसे स्टूडियो में थोड़ा जो चिड़चिड़ा इंजीनियर होता है ना,
कि भाई ठीक से रिकॉर्ड करो, जल्दी करो, ये करो, वो करो. अच्छा. I started becoming that. But then I realized that I think it's not like following my pattern and following my workflow is not more important than keeping the artist's vibe intact. अगर उनकी वाइब खराब हो जाएगी तो दे वोंट बी एबल टू सिंग प्रॉपर्ली. लाइक इफ आई अगर मैं डांट दिया कि तुम सही से नहीं गा रहे हो, तुम ये कर रहे हो. मेरे को गाने से पहले अगर किसी ने डांट दिया तो भैया मैं गई 2 दिन के लिए मैं So गायब that हूँ. happened. I made those mistakes and then learned from them. So there are a few people who may be watching this podcast and be like, नहीं नहीं ये कुछ friendly नहीं है. But yeah, so now if you come back and record with me or work with me in any capacity, I'm much more patient and much more calm. As opposed to whenever you met me last. Okay. But so yeah, come back. that also came back from. I mean that also came from like some experience. Only. Yeah. So you learned from your mistakes. Yeah. A lot of people don't learn. Yeah. And वो अपने धुन में रहते हैं और एक के बाद एक गलतियां करते हैं and then they ruin themselves. Yeah. They ruin their careers and बहुत helpless situation में आ जाते हैं, खुद ही आ जाते हैं. But great that you turned out better. Yeah. So I realized the end goal is more important. कि देखो आज अगर तुमने किसी आर्टिस्ट से बहस कर ली कि उसको सही से गाना नहीं आता है वो, तो वो चला गया. Like decided to come back another day and record. पर तो तुम्हारा आज का एंड गोल तो ये नहीं हुआ ना कि आज का एंड गोल था ये गाना रिकॉर्ड करना. Yes. Yes. अभी अगर ऐसा है कि आर्टिस्ट से नहीं हो रहा है तो बात अलग है. If it's the kind of mistakes that can be foregone and that can be like ignored and fixed later, which we can do now, कि बहुत सारी चीजें पोस्ट में फिक्स हो सकती है, तो कर लो. आर्टिस्ट की वाइब मत खराब करो. बिकॉज आर्टिस्ट को अगर ऐसा लगने लगा कि अरे यार मेरे से नहीं हो रहा है, शिट मैं गा नहीं पा रहा हूँ, शिट, वो अगर हो गया तो वो फिर नहीं हो, उस दिन तो नहीं हो रहा है काम तुम्हारा. और उस दिन काम निकालना है तो यू हैव टू control your mind, control the things you say around the artist and just let them be in their zone. If that's ruining your zone and your workflow, ठीक है यार, वो artist है. थोड़ा you have to kind of put them on the higher pedestal at that point in time. Thank you for doing that. वो करना पड़ता है. क्योंकि मुझे मैंने अपना एक गाना आपके स्टूडियो में रिकॉर्ड किया है और मैंने कुछ प्रैक्टिस की नहीं थी एंड यू वर सो पेशेंट, यू वर सो काइंड एंड जो उसमें हार्मनीज थी आपने अलग अलग तरह की हार्मनीज बताई कि ऐसे क्यों नहीं गाते हो, ऐसे मुझे बहुत मज़ा आया. तो वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और मुझे इस बात की खुशी है दैट यू वर सो पेशेंट विथ मी. Thank so you. yeah, so Glad you had fun. Yes, I did. Now you tell me about your album Moonbounce. So okay, so Moonbounce is my album with Gravity. He's a rapper and songwriter. So Moonbounce ऐसे बना कि just before Moonbounce we had done another album called Supervillain, which was a hardcore like rap album with dark themes and dark concepts and all of that. So I'm like, let's do something that's the polar opposite of this. Let's make a somewhat commercial and pop sounding album. So that's what Moonbounce was, and we had made like 1 or 2 songs. Like there's a song called Q which has Arjun Kanungo on it. Okay. And we were just trying to figure out कि Gravity लिख किस पे सकता है. हालांकि वो किसी पे भी लिख सकता है, but something that he can sing on because he's not like a traditional singer. So I'm like, let's find a sound for his voice that जिस पे उसकी आवाज अच्छी लगे. And I had also not made pop music before that, so making a pop style of beat and all of that is something that was new to me as well. So we were both sort of learning as we go. तो एक एक गाना ऐसे ही बना कि हमने कुछ नया सीखा पिछले गाने से कि अच्छा गिटार भी डाल सकते हो, ये भी कर सकते हैं. So we tried that on the next song. Okay. And that's how the album sort of came into place. तो Outfly Music आपने हिप हॉप ही बनाना क्यों शुरू किया? हिप हॉप ऐसे कॉन्शियस ये नहीं था, डिसीजन नहीं था कि ओके आई वांट टू डू हिप हॉप. इससे पहले मैं लाइक हिप हॉप तो मैंने इंडिया आके शुरू किया. उससे पहले मैं मतलब मेलबर्न में जब था तब थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक वैसा बना रहा था. नॉट EDM बट मोर डांसी म्यूजिक आई गेस, लाइक डिस्को काइंड ऑफ stuff. Okay. थोड़ा retro vibe वाला music, very experimental and very like that was the sound of a person who hasn't found his sound yet. So I would keep making music and I was writing my own songs in them because I sing. तो but मेरा writing process इतना slow है, like I can't write because I don't read enough. You need to read to write. Honestly, that's I think that's something that you need to do. So I'm not a reader, so I couldn't write.
So I would make more beats than complete songs. तो ऐसा हो गया कि गाने 2-3 लिखे हुए हैं लेकिन बीट्स मेरे पास बहुत सारी हैं. मैं ग्रेविटी उसको मिलने के बाद आई वाज लाइक आई कैन प्रोड्यूस फॉर हिम. सो आई वाज लाइक ओके आई शुड लर्न हाउ टू मेक हिप हॉप. Okay. फिर मैंने हिप हॉप सीखने की कोशिश की. लाइक आई Okay. स्टार्टेड लिसनिंग टू मोर हिप हॉप. हाँ. I had always been listening to hip hop, but never as a like never in the with the intention of trying to learn it. तो बस ऐसे सुनता था एंड उसमें भी आई वुड लिसन टू लाइक वेरी वेरी लिमिटेड स्टफ लाइक Eminem हो गया, 50 Cent मे बी. तो जस्ट दोज फ्यू नेम्स लाइक नॉट ऑल ऑफ हिप हॉप, लाइक नॉट ऑल योर अंडरग्राउंड आर्टिस्ट एंड ऑल दैट. तो फिर मैंने एक्टिवली सुनना शुरू किया एंड आई ऑल्सो आस्क ग्रैव इनिशियली कि ब्रो सेंड मी सॉन्ग्स दैट आई कैन लिसन टू एंड दैट आई कैन लर्न फ्रॉम. तो ही वुड सेंड मी सॉन्ग्स एंड आई स्टार्टेड डूइंग माई रिसर्च. बैठ के समझता था कि ओके हिप हॉप बनता कैसे, व्हाट काइंड ऑफ ड्रम्स आई यूज, व्हाट काइंड ऑफ अदर इंस्ट्रूमेंट्स आई यूज्ड, व्हाट्स द मिक्स लाइक. तो ये सब चीज़ें सीखा एंड once I learned it I was like okay, this is easy for me, it comes naturally to me, because I'm a drummer and hip hop is very very drum focused. If you think about the production, like the drums decide everything, the genre, the cadence, the flow, all of that. So my drums game was on point, so I was like okay, I think I can do hip hop. I don't listen to hip hop anymore as much. Like वो मैंने बस बहुत ही पढ़ाई करने के intention से hip hop सुना. But now I've gone back to listening to what I've always been listening to, like rock, pop rock mostly, like John Mayer kind of stuff. तो सुनता मैं वो हूँ, बनाता मैं ये हूँ, and I'm able to like compartmentalize. And that's more so because I studied music production, so I learned how to segregate genres. कि okay, ये genre बनाना है तो these are the instruments you use. You don't go there, you don't use that instrument, वैसा वैसा. So that helps me segregate those two things, that what I'm listening to, what I'm consuming doesn't spill into what I'm making. What I'm making is for another artist and that artist needs to have their own sound. तो ग्रेविटी के साथ काम करने में कैसा लगता है? ग्रेविटी के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है ऑब्वियसली. द रीज़न वाई इट वर्क्स विथ हिम इज़ बिकॉज वो बहुत तेज़ है, मैं बहुत तेज़ हूँ. मेरी बीट ऐसे आधी बनी हुई होती है, उसमें उसका लिखाई शुरू हो जाता है कि ही गेट्स द रिदम, क्योंकि ऐसा कुछ तो बना रहा है ये, इस पे लिख सकते हैं. फिर वो लिखते जाता है एंड देन मेरा बीट हो सकता है थोड़ा इवॉल्व हो जाए, कुछ और कर रहा था फिर कहीं और ही चला जाऊँ मैं एंड अलग बीट बन जाए. बट ही इज बिन राइटिंग, तो उसका फिर ही जस्ट नीड्स टू लाइक कंपोज दैट रिटन मटेरियल दैट ही हैज़. जो उसका वो भी ऑलमोस्ट रियल टाइम में ही चलता रहता है दिमाग में कि ही इज राइटिंग द लाइन एंड ही इज ऑल्सो डिसाइडिंग द फ्लो ऑफ दैट लाइन कि ये इस आवाज़ में बोलूँगा, ऐसे बोलूँगा, व्हाटएवर. तो it's a very no nonsense process with him. I think that's why I enjoy it. We can make a song in an hour or less. What is Consciously with Barkha? So Consciously with Barkha is an attempt to discover people's emotions and their reactions better, basically to get inspired by other people's experiences. And I think in today's time, what we need most is inspiration to keep moving, Life can be very depressing. So yeah, looking at those people who created this for themselves, and they are doing well in their lives. Right. Nice. That's a good concept. So Outfly Music, आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप कैसी थी? पेरेंट्स के साथ पहले से ही मतलब काफ़ी हेल्दी रिलेशनशिप. हेल्दी इज़ नॉट अ राइट वर्ड आई वुड से, but it's been a very cordial relationship since it was like a nuclear family, just me and my parents living in a foreign country. So we've always been like tight as a family. कि I always loved coming back home from school and all of that. मार बहुत खाई है मैंने, मतलब वो तो सब लोग ही खाते हैं I guess. मतलब मार भी खाई है तो भी I'm happy कि अरे मस्ती तो लेकिन बढ़िया की थी. Like that. I guess I kind of knew that this was going to go away at some point. Like some point we're all going to grow up. हाँ तो वैसे अच्छी रही है एंड ever since I moved out I would say it has strengthened a bit, because now we're not in each other's space. They're not always there to like decide my course of life, the way I spend my days, all of that. तो कहीं ना कहीं I've got that freedom, so I'm happier. They don't have to worry about me, so they're happier, and they have work, like both of them have jobs and they're doing like very well. अभी ऐसा है कि सब लोग अपने अपने जोन्स में ऐसा खुश हैं एंड दे आर एक्सेलिंग
I go to Muscat for this 1 month every year. I whatever I say no to all my clients and just go to Muscat because I need 1 month with them every year at least. And they come down, but they come down separately. Like dad and mom का schedule match नहीं होता, so they come to India at separate occasions. So for all of us to be together and spend family time, I need to go to Muscat. और आप अपने स्कूल के दोस्तों से टच में हैं? Yeah, there are a bunch. Like there are a couple of friends here. And there. Arjun, as I mentioned earlier, he was in my school, and I'm obviously in touch with him. Few other friends here and there, the very very close ones. मतलब जिनके साथ ऐसा कभी on off नहीं हुआ, like on ही रहा है हमेशा. कितने कितने आपके बैच से लोगों ने म्यूजिक लिया होगा एज अ करियर? Like three or four people 3 और 4 from school. हाँ, College में से किसी ने नहीं लिया. किसी ने नहीं। तो आप जिस प्रोफेशन में ही हैं वो ही इतना अलग है। तो स्कूल कॉलेज के दौरान आपकी गर्लफ्रेंड्स भी रही? हाँ. तो उनके साथ कैसी रिलेशनशिप थी? आपको आपकी क्या लर्निंग्स रही उसमें? Learnings. So most learnings have been about really what a woman wants. And it's so different. Like the more you learn about it, the more you realize it's so different from what men want. At least most of the time, if not all the time. The more recent ones, I guess, have taught me how to love. How to love? Yeah. Okay. And how subjective that can be. Okay. Ki the way you love one person is not the way you love another person. So you need to figure out how to love that person. Notice करो, observe करो कि वो लोग कैसे जिंदगी जीते हैं, किस टाइप के इंसान है. Just observe first. You know how they say like a good leader is first an observer. कि वो अपने पूरे इसको observe करता है टीम को कि who does what, who like किसकी strength क्या है ये, and that will give you most of your answers कि इस इंसान को क्या चाहिए, expectations क्या है. And they'll mostly tell you in actions or in the form of past experiences कि मेरे साथ ये हुआ, but this is what I wanted. Just be open to change and changing. If it helps you connect with somebody better, if it helps you be a better person, again that's your own parameters कि तुम कैसे better person अपने आप को judge करते हो कि ये ऐसा किया तो that makes me a better person. करो. Okay. ऐसे मत हो जाओ कि like why you don't shut down when you're asked to like change your ways or something. Just because your ways have not been inconvenient for you or for anybody else so far doesn't mean they're going to work with everybody else who comes ahead. तो वो चीज़ है. But not many people want to change, you know. I know. And- That is the sad reality. Why would they make an effort? Why would they make an effort? That's a question you have to answer yourself. कि is this person worth making that effort for? And in order to judge that correctly, you need to first know that person. And in knowing that person, थोड़ा तो तुमको 2 कदम तो आगे जाना ही पड़ेगा ना. You have to change some things about yourself to even spend time to get to know a person. थोड़ा सा knowing oneself भी होना चाहिए. Actually काफी होना चाहिए. Ideally, that should have happened before the relationship even came. But वो हो ही नहीं पाता हाँ, है लोगों yeah, में. We don't know who we are. So like spend enough time single, I guess. You need Spend to learn enough time single. Yeah, learn to live with yourself first. Then learn to live with other people. Like ये तो मतलब the most cliche thing that everybody has heard is कि if you're not happy alone, you can't be happy in a relationship. True. But it is very true. It bears repeating. It is. वो है. अभी मैं अकेले रह रही हूँ, and I haven't gotten to know myself better at any other phase of my life Absolutely, yeah. than this. And I surprise myself every time कि you know मैं ऐसी भी हूँ, मैं ऐसी भी हूँ. So it's a beautiful phase. I'm really enjoying it. और this makes me, you know, this self happiness. This makes me, you know, think of things that I enjoy doing and pick them and do. Actually, मतलब अगर मुझे वॉक्स पे जाना अच्छा लगता है तो मुझे जाना चाहिए. हाँ. अगर मुझे डांस करना अच्छा लगता है तो मुझे करना चाहिए. I have to focus on the things that I like. And उसमें इतना वक्त निकल जाता है. And that's a great time for me. I am doing what I love to do. So yeah, so getting to know oneself helps you stay in a high life condition even more. जितना जल्दी खुद को जान लो ना, वो easy कर देता है. ये जो बात बोली ना आपने, जितना जल्दी खुद को जान लो, ये इतनी इम्पोर्टेंट है ना. बट हमारी इंडियन सोसाइटी में इसको कोई तवज्जो ही नहीं दी जाती है कि आप
25 साल की उम्र तक अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं या वो जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, तो हम खुद एक्चुअली खुद नहीं हैं, हम अपने पेरेंट्स हैं इस समय. If we are, leading a life like that, there has to come a time when we separate ourselves from our parents and find out who we are. उनका तो कुछ मुझ में आदतें आई हैं, पर मुझ में भी तो कुछ यूनिक है, और उसका हमें वक्त ही नहीं मिलता है. और लोगों की जिंदगियां निकल जाती हैं, वो फिगर आउट ही नहीं कर पाते हैं. उन्होंने सोचा भी नहीं होता आखिर मैं कौन हूँ. एम आई माई मदर और माई फादर और whoever, हमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के कितने वो होते हैं, ट्रेट्स होते हैं, अपनी सिस्टर्स ब्रदर्स के होते हैं, अंकल्स आंट्स के होते हैं, नॉट आंट्स या आंट्स ऑल्सो. तो उस सब में मेरा ट्रेट क्या है विच इज यूनिक टू मी. मोस्ट पीपल डोंट गेट टू एक्सपीरियंस दैट. So yeah, staying single is very important and it's fun. It's fun. Yeah. It's funny you mentioned the thing ki parents, like who are you like? Like are you like more like your dad or are you more like your mom? I've had this recent क्या बोलते हैं eye-opening thing कि I've spent most of my childhood and teenage years thinking that I'm like my dad because यही मुझे बताया गया था. But after a point, I think after therapy, I realized I'm so much like my mom. Oh. Like I'm actually equal parts both. And I thought I was like nothing like my mom. Oh. But I'm actually so much like my mom. Okay. Yeah. Okay. Like दोनों का equal parts मेरे पास है. It's like I have dad's क्या बोलते हैं street knowledge. Okay. And I have my mom's emotions. So it's very like that. Okay. हर चीज का दोनों ये है. And I didn't know this. Okay. And that's why it was like I stayed confused for the most part. Like, why am I feeling this way? Why am I reacting this way? Oh, okay. That used to happen, and then that stopped happening because I'm like, yeah, of course. Now that I know that I'm like my mom, I think about how mom would also feel this way about this. Professionally, there are certain norms जो follow करने होते हैं, said unsaid norms. But हम अलग तरह के अगर इंसान हैं, तो हम उसको कैसे अपनाएंगे, कैसे उन norms को, किस mindset से हमें जाना होगा जिससे कि हम उसे अपना पाएं. Like if you have hung out with other musicians, then only you can get an opportunity to get collaborate with another artist. वरना दूसरी जगहों पे तो आप resume भेज देते हैं. I have worked with a lot of other people as well. Like it's all unreleased music at this point, but I've worked with people by just sending them my beats. It's just the way how it works. कि तुम किसी को मिलोगे तो connection तब बनेगा, तब like आर्टिस्टिक काम है ना. दिस इज नॉट अ कि सबसे सस्ते में कौन करके दे रहा है या सबसे जल्दी काम कौन कर रहा है. दिस इज एन आर्टिस्टिक कनेक्शन दैट यू नीड टू बिल्ड विद अनदर पर्सन. कई बार क्या होता है ना, आर्टिस्ट्स बहुत इंट्रोवर्ट्स होते हैं, वो नहीं जाके मिल पाते, वो हैंग आउट नहीं कर पाते, एंड दे कुड बी रियली गुड आर्टिस्ट्स बट देन दे सफर बिकॉज ऑफ दिस. व्हाट कैन दे डू? आई एम आल्सो इंट्रोवर्टेड, सो आई डोंट गो टू गिग्स. So I don't like having a lot of people around. I don't invite a lot of people to my place at once. Like आते बहुत लोग हैं लेकिन individually आते हैं, दो में तीन में आते हैं. सब 5-6 लोग, it's too much for me to handle. Okay. मतलब I'll have fun in that moment, but after that I'll be like super exhausted कि like भाई अभी 4 दिन किसी को मिलना ही नहीं है वैसा. तो for people like that, I think social media है ही इसलिए कि तुम फिर if you're not a person who goes out and meets people or something, you can also send them your beats and you can send them your work and connect with them online and get work. So now it's not that's not the only way. There are other ways. Okay. So introverted भी हो तो तुम you can be a bedroom producer your whole life. हाँ. There are so many people. अच्छा. वो कर सकते हो. आप 16 घंटे काम करते हैं. मुझे ऐसा ये नहीं है. It's not a 9 to 5 kind of thing कि I have to work 16 hours every single day. नहीं, मतलब because you are so passionate about your work, that's why you work for, like there have been times कि आप हफ्तों गायब हो गए हैं क्योंकि आप सुबह उठ रहे थे, म्यूजिक बना रहे थे, खाना खा रहे थे, सो रहे थे, उठ रहे थे, म्यूजिक बना रहे थे, खाना खा रहे थे, सो रहे थे. या आपने हफ्ता भर यही किया, अपने घर से बाहर ही नहीं निकले. तो बहुत मेहनत का काम है ये. ऐसा नहीं कि मजा आ रहा है और कुछ इंस्टाग्राम रील्स होती है ना कि एक बार में एक टक 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 के और एक बीट, फेमस बीट बन गई. ऐसे नहीं होता. यू हैव टू पुट इन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ आवर्स ऑफ वर्क, हार्ड वर्क, और उसके बाद जाके यू आर एबल टू डू. सो आपको उसका करने का मोटिवेशन कहाँ से आता है?
मोटिवेशन नहीं चाहिए उसके लिए, इट्स सुपर फन. It's It's fun. really fun. Okay. I would even if money was not a factor, I would be doing this only. Oh. इतना मजा आता है ये सब करने में, like making songs and all, especially when you have the right kind of people with you. So yeah, the whole process is so much fun that it really doesn't feel like work. The reason why you've seen me working in such like क्या बोलते हैं spurts, कि एक हफ्ता गायब हो गया, काम like काम ही कर रहा है, बाहर नहीं आया घर से. That's when a label is involved or something else is like there are deadlines to meet. Deadlines. हम अपना गाना बना रहे हैं तो we can do it आराम से also. I don't voluntarily choose that lifestyle कि एक हफ्ता मैं बाहर ही नहीं जा रहा हूँ. Like no, that's not fun at all. That's not fun. Okay. I'm out and about. Okay. Since I work from home, I technically go home when I have to work. Otherwise, I can be anywhere. I can be at any friend's place. I can be out of town. Only when there is work and I need to do it, I need to go home. और आपके वर्किंग आवर्स की वजह से या आपका ट्रैवलिंग इतना होता है, आप हमेशा काम करते रहते हैं, उससे आपकी रिलेशनशिप विद योर गर्लफ्रेंड उस पे तो फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता, और उसका बड़ा रीज़न ये है कि वो भी शी इज़ ऑल्सो म्यूजिशियन, शी इज़ ऑल्सो ट्रैवलिंग फॉर गिग्स ऑल द टाइम. सो वो एक चीज़ है, एंड दूसरा कि शी सीज द पैशन आई हैव. तो उस she never stopped me कि like if I say there's work, then there's work. Okay. If I have to go, तो I have to go. Okay. And yeah, that's very sorted that way. She's supportive. हमारी ऑडियंस को आप कुछ कहना चाहते हैं, some words of encouragement or motivation? I mean, words of encouragement तो अभी क्या ही करते रहो जो कर रहे हो. Just be find reasons to be happy, and if you can find that reason within your work, then that's great. And watch more episodes of Consciously with Barkha, because this is a great initiative, and I think these are all like very important conversations. Yes. Presented in a fun manner, I guess, because Yes. you're inviting your friends, so the conversations are the same way that they are when we're just hanging out with no cameras. No mics, I guess. Yes, that's it. And go check out my music. She's dropped the links in the description. So go check out my music. Follow me on Spotify, and yeah, that's it. Thank you so much. Thank you. मंसूरी से सुन रहा है. Sorry, Mansoor bhai.